अस्सलाम वालेकुम। हम आए हुए हैं टेक्सास सैन एंटोनियो में अपने रिलेटिव से मिलने हैं। जैसे मेरे वाइफ के ब्रदर हैं, मेरे जैसे ब्रदर इन लॉ हैं। तो हम लोग आज बाहर आउटिंग पे निकले हैं, तो हम डाउनटाउन आए हैं। तो हम यहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमने अपनी जस्ट हाँ। गाड़ी पार्क हाँ, की है। इसको उठा लेना। ये हैलोवीन नाइट है, उठा तो ले। यहाँ पर काफ़ी रश था और काफ़ी पार्किंग की जगह मिलती है। देखें कि हम आए हुए हैं रिवर वॉक साइड एरिया पे डाउनटाउन पे। तो देख रहे हैं आप, जैसे यहाँ पे बोट वगैरह रिवर साइकिंग के लिए जा रही है। हम लोग रिवर वॉक की तरफ जा रहे हैं कार पार्क करके। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था, मौसम भी बहुत अच्छा था। असल में सैन एंटोनियो में इस टाइम पे काफ़ी मौसम ठंडा है। हम नवंबर में गए थे और मौसम काफ़ी ठंडा है। और अभी भी नवंबर ही चल रहा है शायद जब हम इसको एडिट कर रहे हैं। लेकिन ये है, बच्चों के साथ का एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट होता है। बच्चों को थोड़ा उठाना और यहाँ से फिर उनके साथ ट्रैवल करना थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन मज़ा बहुत आया था। फैमिली गैदरिंग भी थी, मैं अपने भाई से मिलने गई थी और तकरीबन कितने साल बाद, 2.5 साल बाद मैं से मिला। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं, तो वो मैं मिलने जा रही थी अपने भाई से प्रॉपर ऑलमोस्ट 2.5 साल बाद। वो भी यहाँ से ऑलमोस्ट हम लोगों को 3 साल दोनों को हो आ गया रहे हैं, वो उसको सुबह से हम जैकेट लोग पहनाइए। साथ ही आए थे यहाँ पे। रिवर साइड वॉक में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे वॉकिंग जितना भी एरिया हम वॉक करके गए, हम इंतजार में वो थके नहीं हैं। विच साइड? तो काफ़ी लंबा एरिया भी था, उसके बावजूद काफ़ी इंजॉयमेंट भी है, बहुत एक्टिव था, बहुत कुछ हो रहा था यहाँ पे। लोग बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और ये काफ़ी पुराना इलाका है, यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी हैं। हम जब इस पे बैठे थे तो उन्होंने इसकी सारी डिटेल भी बताई। जब हम कश्ती में बैठे थे तो उन्होंने सारी डिटेल भी बताई यहाँ के बारे में। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो पूरा रिवर साइड वॉक एरिया है, ये काफ़ी हैपनिंग एरिया है। होटल्स वगैरह भी यहाँ पर हैं। लाइट्स वगैरह इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह डेकोरेट की हुई है, बहुत अच्छा खूबसूरत लगता है। और जो रिवर है, इसके अंदर इन लोगों ने साइट सीइंग के लिए जैसे छोटी क्रूज वगैरह भी इन लोगों ने ऐड की है, ताकि इसके अंदर आप बैठ के थोड़ा एरिया को अच्छी तरह एक्सप्लोर करें और एंजॉय करें। हमारे यहाँ पे बच्चे जो हैं, कभी मामू के पास जा रहे हैं, कभी अपने डैडी के पास जा रहे हैं, तो ये हमारा सीन यहाँ पे चल रहा था काफ़ी सारा। और बच्चों के साथ यही चीज़ चल रही थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत लाइक अच्छी जगह थी इन्वायरमेंट के लिए, और नेचर प्लेस भी इसको आप कह सकते हैं। और पुरानी इमारतें थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्डिंग्स, ओल्ड बिल्डिंग्स थी, उससे काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे स्केटिंग का भी इंतज़ाम है। Jennifer Lopez as the star. And if you take a look around you, you'll see where Jennifer Lopez was proposed to as well. Everywhere. Off to our left-hand side, we have La Mansion, which means the mansion. It opened up in 2006. It has been open for nearly 175 years. As we go underneath the riverside bridge, I'm going to teach you all how to see our optical illusion that we have on the park. We're going to use the bubblegum shrimp coming up to our left-hand side as a pinpoint. As we exit out from underneath the bridge, look at the very top of the building, high into the left-hand side. You'll be able to see it here in 3, 2, 1, all the way up and to the left. That is the next hospital. If you're taking a look up at it, you're like, hey, Captain Corey, it's two-dimensional. That's just because you're on drugs. The next hospital opened in 1930 as the first full-service hospital in the world. And air conditioning. We're going to listen into the music here for a minute, come back to the tour shortly. Going to be coming up high into the right-hand side. After we round this column, we have a great place for those gamblers out there.
It's called the Casino Club building. Originally built back in 1927, whenever the Casino Association and the San Antonio Club came together in a merger. You'll see it high to the right now. Hey guys, I am just pulling your leg. Gambling is illegal here in the state of Texas, which is why inside originally they were said to do private business. A lot of people thought it was an illegal gambling ring, but the only evidence supporting that nowadays is the name of it. But I have some really good news for you guys with this building instead. If you want to move to the Riverwalk Park to see my beautiful face each and every single day, above Saltgrass, those are all apartments. Yeah, good luck moving in there anytime soon though. There is a 5-year waiting list. I don't make the rules out here, you guys. I wish I did. I would put up like a chocolate fountain somewhere. This area of even more Mexican food. We have another steakhouse. And you know what we can't forget about? The 13 other Mexican food places that are on the Riverwalk Park. That's right, we have 17 in total out here. I'm not even exaggerating. Coming up to our right-hand side, this brick building here, this is the Clifford building. Back in 1941, he moved his office. It's going to be coming up to our right-hand side. You'll even see a statue of his head. He wanted to prove to people that the park would not flood, and he did exactly that. That's why we have so many great restaurants, bars, and shops here to this day. The first restaurant to move out here that is still open is coming up to our right-hand side. It's called Casa Rio. The same family that opened it back in 1946, they still own and operate the building as well. Casa Rio was also the first restaurant to have our dinner charters. Back in the day though, they were not boats like this. They were gondolas. Aww. Like I said, you guys, we are turned onto the man-made portion of the river. This is the only 10% that is not natural. This area was built as a connection between the Riverwalk Park and the Hemisphere Park during the World's Fair. This area goes to about 4 feet deep at its deepest, and it has a concrete bottom, normally sitting around 3 feet. Whereas the natural river back behind us can go anywhere from 2 to 5 feet deep at its deepest, but it's an anniversary or other special occasion. A great place to do so is high into the right-hand side, up in the Tower of America. Up there is a rush. Each and every single hour you spend up there, it does a 360-degree spin of the city. And the reason that I'm allowed to recommend it with our company here at Go Rio, I got engaged up there. In the middle of them, you'll see the child of the future, set to represent the prosperous future that San Antonio is sure to have. They put him up the day I moved here because that's when they knew it was getting good. Took one man 8 months all by himself to put up those 400,000. A patron saint born in the 12th century, lives in Portugal. Never actually came here to Central Texas, but spent a majority of his life in Italy.